हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि आप सभी ने जो प्रीवियस चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 17 एंड द चैप्टर नेम इज एसे राइटिंग. सो इस चैप्टर में हम जानने वाले अबाउट द एसे. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. What is essay? An essay is a short piece of writing on a particular subject. एक essay जो है वो short piece of writing होता है एक particular topic पे, एक particular subject में. However, it is longer than a paragraph. ये paragraph से थोड़ा बड़ा होता है. It may consist of 3 or more paragraph. ये 3 या उससे ज़्यादा paragraph भी हो सकते हैं. An essay may describe a scene, narrate an experience or express the writer's view on some issues of common experience. अब essay जो है वो scene को describe करता है, narrate करता है experience को, या फिर वो राइटर के व्यू को एक्सप्रेस करता है और कुछ इश्यूज को लेकर, ठीक है, ऑफ द कॉमन एक्सपीरियंस वन. सो हियर सम पॉइंट्स आर गिवन. अ गुड एसे हैज द फॉलोइंग फीचर्स. कुछ फीचर्स बताए गए हैं. इट इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग डिवाइडेड इनटू शॉर्ट पैराग्राफ. ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग है जो कि शॉर्ट पैराग्राफ में डिवाइडेड है. नेक्स्ट थिंग इज एन ओपनिंग पैराग्राफ इंट्रोड्यूसेस द सब्जेक्ट और थीम ऑफ द एसे. जो ओपनिंग पैराग्राफ है वो इंट्रोड्यूस करता है सब्जेक्ट या फिर थीम ऑफ द एसे को. नेक्स्ट इज two or more paragraphs constitute the body of the essay which provide details about the topic. दो या दो से ज्यादा जो पैराग्राफ है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बॉडी ऑफ द एसे को और प्रोवाइड करते हैं डिटेल्स अबाउट द टॉपिक. ओके. नेक्स्ट थिंग इज द लास्ट पैराग्राफ कंक्लूड्स द एसे. जो लास्ट पैराग्राफ है वो एसे को कंक्लूड करता है. नेक्स्ट इज यूनिटी, ऑर्डर एंड वैरायटी आर द हॉलमार्क्स ऑफ अ गुड एसे. जो यूनिटी, ऑर्डर, वैरायटी है वो हॉलमार्क है अच्छे एसे के. Next thing is grammatical correctness, appropriate punctuation marks and correct spelling make an essay interesting and readable. जो grammatical correctness है, appropriate punctuation mark है और correct spelling है वो essay को और ज़्यादा interesting और readable बना देता है. ठीक है. Now let's start this essay. So the first essay topic is lockdown effects on students' life. So let's read it. We all have been affected by the COVID-19 pandemic. However, the impact of the pandemic and its consequences are felt differently depending on our status as individuals and as members of society. While some people were trying to adapt working online, the students were also adopting homeschooling via various online platforms. Via, that means through. Okay. In the beginning, the lockdown was considered as holidays by some children, but when it was extended, it had made the students realize the value of attending schools. They appreciate the hard work of their teachers who were now trying their best to teach students through online classes and were providing them with study material. There was a complete change in the atmosphere of the class. Teachers were not leaving any stone unturned so that students could not waste their precious time sitting idle. Although initially taking online classes was a challenge for students, but they have quickly adapted so that their academic path could not get affected. This had taught them never to run away from challenges and to try to adapt according to the situation. The lockdown had also made them appreciate their parents who usually work day and night to fulfill their reasonable and unreasonable demand and never complain. Spending more time with parents gave them an opportunity to understand the value of a family and to learn what quality time is. Parents had also taught them the value of money and how necessary it is to save money for such difficult situations or circumstances. Students had also learned that it is our moral duty to stand by our employees in offices and factories, and we should help them because they are the people who make our life worth living. Students learned that we should be thankful to our government and police officers who were trying to make people follow the rules of social distancing. We should also be grateful to health workers who are putting their lives in danger to save thousands of lives. Lockdown had taught us many lessons about life. We had learned to handle difficulties with a positive mind, and we hope these lessons will remain with us throughout the life. तो इस हिस्से में आपने जाना अबाउट द लॉकडाउन लाइफ, ओके, ड्यूरिंग द कोविड-19. ठीक है. Now, the next essay topic is friendship. A dictionary contains the definition of friendship and encyclopedia supplies interesting facts on friendship, but all the definitions and facts do not convey what friendship is all about. It cannot be understood through words. The only way to understand friendship is through experience. It is an experience that involves the senses. आपने देखा यहाँ पर स्टूडेंट की कैसे एसे की जो स्टार्टिंग है वो अच्छे से की गई है. इंट्रोडक्शन जो एकदम कैची बनाया है, आई कैची बना रखा है. ओके. नेक्स्ट थिंग इज friendship can be seen in an old couple sitting in the park holding hands, in a child freely sharing the last cookie,
Friendship can be heard in the words of two friends who took out time to eat lunch together on an extremely busy day. It is the way they talk to each other, not the words. Friendship is felt in a touch. It is a pat on the back from a teammate, a high five between classmates, and the wet lick from a family dog. It's a touch that reassures that someone is there who cares. The touch communicates more than words or gestures. It is instantly understood. Friendship has a taste. It tastes like homemade rotis, the ingredients all measured and planned, then carefully mixed and kneaded. Then the quiet waiting as the rotis are made. Hot from tawa, the roti tastes more than the sum of its ingredients. There is something else in friendship, perhaps the thought of the baker as her hands knead the dough for the cake, or her patience as she waits for the dough to rise, unseen and unmeasured. This is the ingredient that makes the difference. Warm, fresh, from the oven with a little butter, the difference you taste is friendship. Friendship has a smell. It smells like the slightly burnt pakoras your brother made especially for you. It smells like your home when stepping into it after being away for a long time. It smells like a box of chocolates. Friendship has a variety of smells that define the memory. Finally, more than the other senses, friendship is it is the language of the heart, a language without words. It fills the heart, allowing us to experience the best life has to offer a friend. सो इस ऐसे में आपने जाना अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है। और आपने ये भी देखा कि कैसे ऐसे को अच्छे से आई कैची बनाया गया है। आपने देखा हर एक पैराग्राफ को अच्छे से कर रखा है ऑर्गेनाइज, और लास्ट वाला पैराग्राफ को भी बहुत अच्छे से कंक्लूड कर रखा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट ऐसे टॉपिक इज अबाउट ओनम, फेस्टिवल ओनम. So let's read it. India is our motherland. It is famous for its varied culture and diversity. India is land of festivals and colors. One such festival celebrated in the south of India is Onam. It is celebrated in the state of Kerala. Kerala is also called God's own country due to its natural beauty. The rivers, lakes, mountains, and backwaters all add to the beauty of Kerala. Onam is a harvest festival which is celebrated with much pomp and pleasure in Kerala, and wherever there are Keralites. The language spoken in Kerala is Malayalam, and the people there are called Malayalis. There is a saying back in Kerala that we may find a Malayali in Mars also. So, as we can see, Keralites are there everywhere in the world. So, Onam is known to everyone in the world. Onam is celebrated in a unique way. All the dishes served are vegetarian. The food is served on the big banana leaf that is cleaned and wiped thoroughly. Most of these dishes are made with the favorite fruit kera or coconut, as it is commonly called. Kerala derives its name from Kera, which means it is the land of coconut, and Kerala is truly a land of coconuts. The swaying of the coconut leaves beside the river banks is a sight to behold. There, there goes a story behind the celebration of Onam. Long time ago, Kerala was ruled by a pious and noble king Mahabali. तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा कि कैसे जो एस्से की शुरुआत है वो की गई है, और कैसे अब उसके बाद उस एस्से में बताया गया कि क्यों हम ओणम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. ओके, तो यहाँ पर आपको बताया है कि लॉन्ग टाइम अगो केरला में एक रूल करते थे पायस और नोबल किंग जिनका नाम था महाबली. इट इज सेड दैट ड्यूरिंग हिज रूल नो वन न्यू पॉवर्टी. उस समय किसी को नहीं पता था कि गरीबी क्या होती है. पीपल वर सेल्फ सफिशिएंट एंड एवरीवन वाज हैप्पी. सभी अच्छे से सेल्फ सफिशिएंट थे और हैप्पी थे, खुश थे. दे वर सो हैप्पी दैट दे नेवर एवर हैड द नीड टू प्रे. वो इतने हैप्पी थे कि उनको जरूरत भी नहीं थी प्रे करने की. ओके, द गॉड्स वर डिस्प्लीज्ड एंड वर स्केयर्ड, सो दे वेंट एंड कंप्लेन टू लॉर्ड विष्णु, अ हिंदू गॉड. तो गॉड्स बहुत डिस्प्लीज हो जाते हैं और बहुत डरे हुए होते हैं, तो वो जाते हैं लॉर्ड विष्णु के पास और कंप्लेन करते हैं. As a solution, he was born in the form of Vamana, which is the fifth avatar or form of Lord Vishnu. तो वो solution के लिए लॉर्ड विष्णु अवतार लेते हैं वामना का, जो कि फिफ्थ अवतार होता है, पांचवा अवतार होता है. He came as a small boy to King Mahabali's court and asked him for some land. वो छोटे से लड़के के फॉर्म में महाबली के पास जाते हैं और पूछते हैं एक कुछ लैंड के लिए, ठीक है. The measure of the land was 3 feet, और जो measure है लैंड का वो 3 feet है. Okay, King Mahabali readily agree to this small child demand, तो वो अग्री कर जाते हैं. It is said that Vamana grew gigantic in size, और ये बात बोली जाती है कि जो वामना है, वामना अवतार है विष्णु जी का, वो एकदम बड़ा हो जाता है साइज में. Okay, he took his foot up to measure the first foot of land, and when he kept his feet down, it covered the whole of the heaven and earth, and with his second step, he covered the nether world. Okay,
तो जब वो पहला फुट रखते हैं तो पूरा वर्ल्ड हेवन जो है वर्ल्ड का ऑक्यूपाई कर लेते हैं, सेकंड वाले में वो नेदर वर्ल्ड को कर लेते हैं। फाइनली वामना डिड नॉट नो वेयर टू कीप हिज थर्ड फुट एज देयर वाज नो लैंड लेफ्ट। अब थर्ड फुट वो कहाँ पर रखे, क्योंकि अब तो लैंड है ही नहीं। ओके, एज अ रिप्लाई किंग महाबली सेड, किंग महाबली बोर्ड हिज हेड एंड वामना केप्ट हिज फुट ऑन हिज हेड। तो उनके रिप्लाई के बाद किंग महाबली क्या करते हैं, अपने हेड को बो करते, बोलते हैं यहाँ पर आप अपना तीसरा पैर रखिए, मतलब तीसरा जो स्टेप है वो रखिए, ठीक है। और वो वहां पर अपना तीसरा फुट रख देते हैं, यानी कि तीसरा स्टेप जो है वो रख देते हैं उनके हेड में। वामना और लॉर्ड विष्णु was pleased with the king's sincerity and hence granted a boon to the king that he was allowed to visit his subject once a year. Okay, तो वामना यानी कि जो लॉर्ड विष्णु हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं राजा की सिंसियरिटी को देखते हुए, और वो एक बून को ग्रांट करते हैं टू द किंग दैट ही वाज अलाउड टू विजिट, मतलब वो विजिट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को वंस अ ईयर, साल में एक बार। सो ओनम इज द डे दैट वाज ग्रांटेड बाय वामना टू किंग महाबली टू विजिट द सब्जेक्ट। तो ओनम ही वो दिन है जब किंग महाबली आते हैं, विजिट करते हैं, अपने सब्जेक्ट से मिलते हैं। द पीपल स्टिल वेलकम हिम वाज अ मार्क ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट बाय सेलिब्रेटिंग इट एज ओनम, और लोग उनका वेलकम करते हैं, लव एंड रिस्पेक्ट शो करते हैं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव 10 days holidays during ओनम, स्कूल्स एंड कॉलेज में छुट्टी होती है 10 दिन की। वेरियस गेम्स डांसेस एंड ड्रामास ऑर्गेनाइज्ड, गेम्स ड्रामा और डांसेस ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। ड्यूरिंग ओनम वी कैन फाइंड मेनी पीपल ड्रेस्ड एज किंग महाबली, हम देखते हैं बहुत सारे लोग किंग महाबली जैसे ड्रेसअप हो रखे हैं, स्पेशली इन शॉप मॉल्स, अम्यूजमेंट पार्क एक्सेट्रा। केरला मस्ट बी विजिटेड ड्यूरिंग ओनम। ओके, तो यहाँ पर आपको इस essay में बताया गया है ओनम फेस्टिवल के बारे में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट essay टॉपिक इज नेल्सन मंडेला। So Nelson Mandela was born in Mwizo, South Africa on 18 July 1918 में ही पैदा हुए थे। He was in the forefront of anti-apartheid movement in South Africa. In 1964, he was sentenced to life imprisonment and sent to Robben Island and released from prison in 1990 after 26 years. तो 1964 में उनको जेल में डाल दिया गया था और after 26 years ये आते हैं 1993 में वापस जेल से। He was awarded a Nobel Peace Prize along with F.W. de Klerk. In 1994, he became the democratically elected president of South Africa. 1994 में president बन जाते साउथ अफ्रीका के। On 5th December 2013 he passed away, और 5th December 2013 में ये इनकी डेथ हो जाती है। In 2009, the United Nations declared 18 July the day Nelson Mandela was born as Nelson Mandela International Day in recognition of Mandela's contribution to global peace and freedom. 2009 में डिक्लेयर कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया था कि 18 जुलाई को, जिस दिन नेल्सन मंडेला का बर्थडे है, उसी दिन उनका इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबल पीस में और फ्रीडम में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिब्रेटिंग मंडेला डे इज टू स्प्रेड द मैसेज दैट ईच इंडिविजुअल हैज द एबिलिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द वर्ल्ड फॉर इट्स बेटरमेंट, देयरबाय बिल्ड अ ग्लोबल मूवमेंट फॉर गुड। तो क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनका एक मानना था कि हर एक इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ क्षमता है काम करने की, वर्ल्ड को चेंज करने की, ठीक है। द डे वाज लॉन्च्ड टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी इंटरनेशनली एंड द प्रमोशन ऑफ अ कल्चर ऑफ पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। He said, "What count? It is what difference we have made in the lives of other." मतलब हमने क्या differences किए हैं दूसरों की जिंदगी में, that will determine the significance of the life we led. If every one of us heeds the call to simply to do good every day, we would live Nelson Mandela's legacy and help to build a world of our dreams. So this essay was about Nelson Mandela. Okay, student. Now, student, आई होप कि आपको ये ऐसे राइटिंग जो है अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आपका होमवर्क है कि आपको हर एक ऐसे को एक बार फिर से अच्छे से रीड करना है, और आपको एक्सरसाइज में कुछ ऐसे के टॉपिक दिए गए हैं, उसमें आपको ऐसे को लिखना है, ठीक है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, स्टूडेंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।